Welcome champs to English Kapotli and I am Avijit. Today I am going to teach you Julius Caesar Act 2 Scene 1. Okay? Act 2 Scene 1 will be taught in ICSE class 9. चलो भाई आज शुरू करते हैं आज का लेसन. बहुत मजा आएगा. Come on, let us start with the class today. Act 2 Scene 1. The scene takes place in Brutus's orchard. Enter Brutus in his orchard. Orchard means garden. Brutus का garden में this scene takes place. Now, this is the first speech of Brutus. He is calling his servant Lucius. Lucius is Brutus's servant. उन्हें बुलाते हैं. What Lucius हो? अरे भाई Lucius कहाँ पर हो? Where are you? I can't by the progress of the stars give guess how near today. Means by the progress of the stars, by the situation, position of the stars, I just can make it out कि how far today means how far the day to break. Means सुबह होने के लिए अभी कितना देर बाकी है मुझे ये पता नहीं चल रहा. लूशियस आई से, तो लूशियस तो गहरे नींद में है. इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय है और गहरी नींद में है लूशियस. लेकिन ब्रूटस सो नहीं पा रहा था. आई वुड इट वेयर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली. तो नाउ व्हाट हैपेंड, ब्रूटस इज टेलिंग भाई काश अगर ये मेरा फॉल्ट होता इतना साउंड स्लीप करने के, काश ये मेरा फॉल्ट होता टू स्लीप सो साउंडली. ब्रूटस इज टेलिंग दिस वन बिकॉज ब्रूटस वाज ऑलरेडी अवेक. उन्हें नींद नहीं आ रहा था और वो अपना ऑर्चर्ड में घूम रहे थे. आपको पता ही है कि नींद क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्ट 1 सीन 2 में यू हैव ऑलरेडी रेड दैट हाउ केशियस वाज ट्राइंग टू मोटिवेट ब्रूटस. केशियस ऑलरेडी हैज मेड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर. ओके, और केशियस चाहते थे, केशियस वाज विलिंग दैट ब्रूटस शुड बी देयर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. फॉलोड. देन व्हाट हैपेंड, व्हाटएवर द rude or whatever the mistake may be there in that conspiracy, that one will be hidden because of Brutus's presence over there. Because you know maximum Romans they love Brutus too very much. तो यहां पर बोल रहा है कि भाई अगर मैं इतना साउंड स्लीप कर सकता तो कितना अच्छा होता था. Means if I would have been slept so very soundly. Okay, now when Lucius, when भाई Lucius तुम कब जगोगे, when are you going to wake? Awake I say. What Lucius? भाई Lucius कहां पर हो, जल्दी जल्दी जगो. Now enter Lucius. Lucius तेजी तेजी से आते हैं. Lucius called you my lord. My lord, have you called me? Brutus, get me a taper in my study. Lucius, आप जाइए, you just go and bring me a taper. You know champs, taper का मतलब क्या है? This means a candle. Taper का मतलब है आपका candle. आप मुझे कैंडल ला के दीजिए इन माई स्टडी. मेरे स्टडी से कैंडल लेके आइए. लूशियस, वेन इट इज लाइटेड कम एंड कॉल मी हियर. जब वो कैंडल जल जाएगा, वेन इट इज ऑलरेडी लाइटेड, यू ब्रिंग दैट कैंडल एंड कॉल मी, मुझे बुला लेना. नाउ लूशियस, आई विल माई लॉर्ड. ही एग्जिट्स. ओके, ही गोज. नाउ ब्रूटस, दिस इज यू कैन टेल दिस इज द सॉलिलॉक्वी ऑफ ब्रूटस. दिस इज द ब्रूटस का सॉलिलॉक्वी है. Brutus is telling it must be by his death. Whose death? Now question arises, किसका death? This is none other than Julius Caesar. See, Cassius was making a conspiracy. आपको पता ही है कि ब्रूटस को वहां पर इन्वॉल्व कराना चाहते थे. Now Brutus is thinking कि भाई अगर जूलियस सीजर राजा हो जाते, if he becomes a king, he may become a monarch. Doubt arises there because you see now republic जो था रोम वो तो अभी नहीं रहा because due to the death of Pompey का डेथ का बाद that republic is not there. Now all in all Julius Caesar is there. Follow. For my part means as far as I am concerned, I know no personal cause to spur at him. Means मेरा उनका against में जाने के लिए to attack him, I don't have any personal reason. मेरा खुद का कोई personal reason तो है नहीं. But for the general, you know, champs, ये general का मतलब क्या है? Means आम जनता, means common citizens of Rome. He would be crowned. How? Means मैं अगर उनका against में जाने के लिए मेरा पास कोई भी reason नहीं है, लेकिन उनका against में जाने के लिए अगर general good means अगर citizens का
लिए अगर मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ा फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, he is willing to take. Now he is telling he would be crowned. How that might change his nature? There is the question. ठीक है भाई, जब वो राजा बन जाएंगे उनका नेचर में क्या बदलाव आएगा? देयर इज द क्वेश्चन. वहां पर प्रश्न है कि राजा बनने का बाद what changes is going to happen with Julius Caesar, how he will behave with the citizens. Okay, it is the bright day that brings forth the adder. Means एक sunny day, बहुत जिस दिन बहुत ही सूरज बहुत चमकता है, means it is a bright day, means a very hot day when the sun is there. Okay, then brings forth the adder. Adder का मतलब है एक poisonous snake, जहरीला सांप, and that craves very walking, and at that time only it becomes very difficult for to walk. Okay, उसी समय में आपको carefully चलना पड़ेगा. Means you have to walk very cautiously, very carefully. Crown him that, and then I grant we put a sting in him. अगर उन्हें जब क्राउन किया जाएगा उनके अंदर में वेनम दिया जाएगा. मीन सांप का जो वेनम होता है, दैट वेनम वी विल गिव हिम बाय क्राउनिंग. ओके, एंड देन आई ग्रांट वी पुट अ स्टिंग इन हिम. मीन्स वी जस्ट गिव अ स्टिंग, मीन्स अ वेनम इन हिम. उनमें जो सांप का जो पॉइजन होता है उन्हें वेनम बोला जाता है, तो हम लोग उनको वेनम देंगे बाय क्राउनिंग. दैट at his will he may do danger with the abuse of greatness is when it disjoins. वहां पर वो कोई भी डेंजरस कदम ले सकते हैं, बिकॉज अभी तो वो बहुत पावरफुल है, इज ऑलरेडी बिकम द किंग. अभी किसी का जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी पर्सन. ओके, द अब्यूज ऑफ ग्रेटनेस इज व्हेन इट डिसजॉइंस रिमोर्स फ्रॉम पावर. यू नो चैम्प्स, इसका मतलब है द पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी इज मिसयूज्ड इफ देयर इज नो फीलिंग ऑफ पिटी इज देयर. मतलब आप राजा बन तो जाते, आपको ऑथोरिटी मिल जाता है, लेकिन ऑथोरिटी मिलने का बाद आप में अगर कोई पिटी नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई काइंडनेस नहीं है आप में, when you are ruling, then what happened? The position is misused. Follow champs? And to speak truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. As far as Julius Caesar is considered, मैंने कभी उनको नहीं देखा to rule with his feelings rather than his intellect. मतलब वो कभी भी affections मतलब feelings, माने उनमें feelings मैंने कभी देखा नहीं है. And every time I have seen him to be having total faith in his intellect. But it is a common proof that lowliness is young ambitious ladder. देखिए यहां पर जो है ना, दिस इज अ मेटाफर. मीन्स लैडर कौन है बताइए? तो लैडर का मतलब है द कॉमन सिटीजन्स ऑफ रोम. ओके, तो यहां पर बोला जा रहा है इट इज अ कॉमन प्रूफ. लोलीनेस इज यंग एम्बिशियस लीडर, मतलब एम्बिशियस पर्सन्स दे ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल. Where to the climb upward means when they climb upwards, जब वो ऊपर उड़ जाता है, चढ़ जाता है ऊपर में, turns his face, but when he once attains the upmost round, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds. तब वो जब ऊपर चले जाते हैं, आसमान का तरफ देखते ही, just looks at the skies, scorning the base degrees. Scorning the base degrees means what happened? He just humiliates, means जो भी means the small citizens, okay, the common citizens who has helped him to reach the height, he just forgets those common citizens. This is the thing which is being told by all the persons who utilize the common people to reach to a height. Scorning the base degrees by which he did ascend, मतलब वो जिस कॉमन पीपल का हेल्प लेके वो ऊपर चढ़ा था, मीन्स ascend, he has rise up to the top, उन सभी को he just scorns at them, gives an angry glance. okay, उन लोगों के लिए कुछ भी काइंडनेस नहीं रहता है. सो सीजर में तो ये चीज सीजर के लिए भी हो सकता है. देन लेस्ट ही मे प्रिवेंट, तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपन, वी हैव टू प्रिवेंट हिम. हमें उनको किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा.
And since the quarrel will bear no color for the thing he is, fashion it does that what he is augmented would run to these and these extremities. इसका मतलब है and since the quarrel मतलब अभी जो झगड़ा है will bear no color, वहां पर कोई भी कलर नहीं है, मीन्स नो कलर इज देयर इन दिस क्वारल. अभी का जो सिचुएशन है, जो क्वारल है, विल बेयर नो कलर मीन्स इसका कोई लाभ नहीं होगा, नो फ्रूटफुल थिंग्स विल हैपन फॉर द थिंग ही इज, मीन्स अभी जो सिचुएशन में है, अभी जो पोजीशन में जूलियस सीजर है, अभी हम उन लोगों का उसका अगेंस्ट में डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे. वी विल बी अनेबल टू गो अगेंस्ट हिम डायरेक्टली. फैशन इज दस, फैशन इट डज माने अभी हम लोगों को इस तरह से ये जो कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी चीज जो है उसको वी हैव टू शेप इन सच अ वे दैट ही इज ऑगमेंटेड, मीन्स जो होने वाला है, विच इज गोइंग टू हैपन. व्हाट ही इज ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब है when the right time will be there, means when a situation will mature, would run to these and these extremities. Okay, तब ये हो सकता है, all these things, all these possible things may happen and therefore think him as a serpent's egg. तो इसीलिए उनको एक serpent का egg समझना चाहिए. We should try to think him as a serpent's egg. You know, serpent का मतलब है means a snake which is a very poisonous, which hatched would as his kind grow mischievous. अगर वो अंडा means egg अगर hatch होता है, then what happens? That serpent will come out and it will grow mischievous and kill him in the shell. तो that is why before getting hatched, उनको hatch होने का पहले ही shell के अंदर में मार देते हैं. Because अगर वो hatch हो जाता है तो वो serpent total destruction will be there. तो who is this serpent's egg? You know, ये भी एक metaphor है. Okay, ये भी यहाँ पर serpent's egg is being compared with Julius Caesar. Okay, come on, proceed. आगे चलते हैं. Enter Lucius. Lucius' speech is there. The taper burneth in your closet, sir. Means I have already lighted the taper in your closet. Means आपका closet में मैं taper को burn करके आया हूँ, candle को रखा हूँ. Searching the window for a flint. मैं एक flint को जब ढूंढ रहा था, you know what is the meaning flint? Flint means with the help of, these are the striking stones are there. जिस stone को strike करने से fire is there. तो जब मैं flint ढूंढ रहा था, I found this paper, मुझे ये पेपर नजर आया. Thus sealed up, ये पेपर sealed है, and I am sure it did not lie there when I went to bed. और मुझे ये पूरा sure हूं मैं, I am very much sure that when I have gone to bed, this paper was not there. Okay, gives him the letter. Brutus, get you bed again. चलो तुम सो जाओ, बिस्तर पे चले जाओ. It is not day, अभी तक भी सुबह नहीं हुआ है. Is not tomorrow, boy, the Ides of March? Tomorrow? तो boy, कल क्या Ides of March है? Means the 15th of March. Lucius, I know not, sir. Look in the calendar and bring me word. ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ आप कैलेंडर में थोड़ा देख लीजिए और मुझे बताइए कि कल का डेट क्या है. Now Lucius, I will, sir. Now Brutus tells, the exhalations whizzing in the air, means the luminous gases whizzing in the air give me so much light that I may read by them, means sufficient light is there and I will be able to read with this light. Opens the letter and reads. Brutus, thou sleepest. Brutus, तुम सो रहे हो, आप सो रहे, you are just sleeping. Awake and see thyself. Come on, rise up and see your worth, see your importance, see yourself, see thyself means see yourself means know your worth. Shall Rome, etc. What is the meaning of this one? Shall Rome, etc. means Rome and his citizens. Okay. Speak, strike, redress. Speak, strike, redress. आप बताइए. You just speak it out. Strike. हम लोग उनको कोई एक्शन करना है. Redress. Brutus, thou sleepest. Awake. Brutus, अभी भी तुम सो रहे हो. You are asleep. Come on, wake up. Such instigations have been often dropped. Here, I have took them up. But this sort of instigation, this sort of exciting words, it has also come previously to me. Here I have took them. Shall Rome, etc. Thus must I piece it out. Shall Rome stand for one man's awe?
तो इसका मतलब shall roam etc. मतलब he himself is completing the sentence and telling that shall Rome stand under one man's awe. Awe का मतलब है आपका fear. What Rome? My ancestors, my ancestors, it refers to Lucius Junius Brutus. इसका बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्ट 1 सीन 2 में, इन लाइन नंबर 158 में इट वॉज रिटन अबाउट लूशियस जूनियस ब्रूटस. ओके, तो जब ये टर्क्विन अपने आप को राजा मान रहे थे, मीन्स व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग, लूशियस जूनियस ब्रूटस हैज जस्ट थ्रोन हिम आउट ऑफ द kingdom. Speak, strike, redress. Am I entreated to speak and strike? क्या मुझे everybody is requesting, everybody is entreating me that I should speak and strike? Oh Rome, I make thee promise. Rome, I make thee promise. If the redress will follow, thou receivest thy full petition at the hand of Brutus. इसका मतलब है if all the things can be set right, if I interfere, okay, if I speak and if I strike, then I am giving you this assurance, Rome. I am giving you, means I am making a promise that my full support will be there for the benefit of Rome. Okay, champs? Now, enter Lucius. Lucius, sir, march is wasted 15 days. इसका मतलब है that day was the 15th of March. Knock within. तो दरवाजे पे कोई नॉक करता है, somebody knocks at the door. Brutus, it is good. Go to the gate. Somebody knocks. Now Lucius exists. तो कोई गेट पे नॉक कर रहा है, आप जाइए, you go and see who is there at the gate. Since Cassius first did wet me against Caesar, means Cassius was the first person who has wet me against Caesar, incited me against Caesar. I have not slept. तब से मुझे नींद नहीं आ रहा. Means I am just passing sleepless nights. Between the acting of a dreadful thing, means between the acting of a dreadful, means dangerous thing, and the first motion, all the interim is like a phantasma. Okay, तो कोई भी एक्शन होने का पहले और एक्शन होने का हो जाना, वो जो पीरियड है, में दिस ट्रांजिशन पीरियड, ये पीरियड जो है, ऑल द इंटरिम इज लाइक ए फैंटास्मा, जस्ट लाइक अ नाइटमेयर और ए हिडियस ड्रीम, मीन्स अ वेरी डेंजरस, अ ड्रेडफुल ड्रीम. द जीनियस एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट. जीनियस मतलब है आपका मीन्स द माइंड. ओके, जीनियस मीन्स आपका जो rational powers, okay, mind, the rational powers, and the mortal instruments means the passions of the body are in a council, means they discuss, are in a discussion, and the state of man, उस समय में human being का जो अवस्था है, mean the situation of the man is just like a little kingdom, is just like a small kingdom, suffers then the nature of insurrection, means at that time the body, means तो हमारा जो ह्यूमन मैन का जो नेचर होता है, वो एक स्मॉल किंगडम की तरह हो जाता है. एंड देन सफर्स ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, माने इन दोनों का रिवॉल्ट में हमारा जो नेचर है, मीन्स ह्यूमन नेचर, वो इट इज अंडर ए टर्मोल, इट इज अंडर अ रिवॉल्ट. ओके, फॉलो चैम्प्स. नाउ एंटर लूशियस. Lucius, sir, it is your brother Cassius at the door, means in the early in the morning, Cassius has come. Who doth desire to see you? Cassius has come and he wants to meet you, wants to see you. Now, Brutus asks, is he alone? क्या वो अकेले है? Lucius, no sir, there are more with him. उनके साथ और भी बहुत जन हैं. Brutus, do you know them? Lucius, no sir. Their hats are plucked up to about their ears. मतलब उनका जो hats है वो कान तक ढका हुआ है. And half their faces buried in their cloaks. Means उन लोगों का जो faces है, half of their faces is buried in their cloaks. That by no means किसी भी तरह I may discover them, means that is why by no means I may discover them, किसी भी तरह से मैं उन लोगों को पहचान नहीं सका. By any mark of favor. Okay, now Brutus, let them enter. Lucius exists. They are the faction, means they are the faction. Faction का मतलब क्या है? Conspirators.
This is another soliloquy of Brutus. O conspiracy, shamest thou to show thy dangerous brow by night? Means conspiracy. Why are you so much ashamed to show your face by night? Brow means face. When evils are most free, means night time में all the evils, means all the जो notorious person, evil deeds, उन लोग freely movement करते हैं. Then why are you so very afraid to show your face, show your dangerous face? Oh, then by day, where wilt thou find a cavern dark enough to mask thy monstrous visage? तो जब सुबह होगा, when there will be a daytime, where will you find a cavern? Means where you will find a dark cave, dark enough to mask thy monstrous visage, which is so very dark enough to hide your monstrous, means dangerous face. ऐसा dark cave आपको कहाँ मिलेगा in the daytime? Seek none conspiracy. Come on, don't search all these things. Hide it in smiles. आपका जो भी dangerous mission है, whatever the dangerous intention or mission, जो कुछ भी है, you just hide all those dangerous intentions with smiles and affability. Affability का मतलब है आपका courtesy. Okay. For if thou path thy native semblance on, means इसका मतलब है you just walk with your natural face, with your natural behavior. अगर आप natural behavior नहीं expose करते, no Erebus, not even hell. Erebus का मतलब है hell. Okay. Itself were dim enough to hide thee from prevention, means hell will also be not so dark to hide you from being prevention. Okay. Now enter conspirators Cassius, Casca, Decius, Cinna, Metellus and Trebonius. Now this is the Cassius' speech is there. I think we are too bold upon your rest, means we are very bold to disturb your rest. Good morrow, Brutus. Do we trouble you? Means are we providing any trouble to you? Means क्या हम लोगों ने आपको कुछ तकलीफ पहुंचा रहे हैं? Brutus. I have been up this hour. No, not at all. I have already awakened. Awake all night. मैं तो सारा रात ही सो नहीं पा रहा हूं. No, I these men that come along with you. May you introduce me with all these persons? क्या आप इन लोगों को साथ मेरा introduction कराएंगे? Cassius. Yes, every man of them. And no man here but honors you. And everyone doth wish that you had but that opinion of yourself. Okay. मैं सभी का साथ आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और यहां पर जो भी व्यक्ति है, means all the persons present over here, everyone doth wish, means everyone wishes you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you. सभी चाहते हैं कि जो रोमन्स, every noble Romans जो आपसे चाहते हैं वो चीज आप करें. Means whatever all the Romans want from you, all these persons over here, they also want that you should exhibit whatever the qualities are there in you, which all the Romans wants from you. Followed. This is Trebonius. Brutus, he is welcome hither. Cassius, this is Decius Brutus. Brutus, he is welcome to. Cassius, this is Casca, this is Cinna, this Metellus Cimber, Brutus. They all are welcome. What watchful cares do interpose themselves betwixt your ears and night? Means, आप लोगों क्यों जगे है? What is the thing which is troubling you? What is the thing which is worrying you and has kept you awake all night? And that is why there is no sleep in your eyes, means it prevents you from sleeping. Cassius, shall I entreat a word? Means you see this is an aside. तो Cassius बोल रहे हैं कि मुझे आपसे कुछ बात कहना है. Brutus and Cassius they whisper. Now तो Brutus और Cassius थोड़ा सा स्टेज का साइड में चले जाते हैं and this is the speech of Decius. Here lies the ease, doth not the daybreak here. तो मुझे लग रहा है कि यहां पर इस डायरेक्शन है. From here only the day will break. Now Casca objects no. Cinna, oh pardon sir, it doth. Yon grey lines that fret the clouds are messengers of day.
means yawn, there are those gray lines, matlab yawn means there, gray lines that fret means that show the approach of the clouds are the messengers of day. Casca, you shall confess that you are both deceived. आप दोनों ही गलत. Here, as I point my sword, the sun rises, which is a great way growing ऑन द साउथ मीन्स यहां पर बोल रहा है कि नाउ सी जहां पर मैं तलवार को पॉइंट कर रहा हूं द सन इज विल राइज फ्रॉम देयर मीन्स टू ऑन द साउथ ओके वेइंग द यूथफुल सीजन का मतलब है आपका स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर मीन्स अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है सम 2 months hence अब हायर टूवर्ड्स द नॉर्थ और 2 महीने का बाद और नॉर्थ का तरफ चले जाएंगे he first presents his fire means the first presents his fire means the first rays of the light and high east और भी थोड़ा high east का तरफ stands as the capital directly here means the sun will rise directly over the capital का ऊपर में sunrise होगा followed तो अभी spring season है that is why it is going towards the south और 2 महीना का बाद after 2 months what happen up higher towards the north means और north की तरफ चला जाएगा and his first rays of the sun will fall the high east just above the capital. Now Brutus come forward with Cassius. Give me your hands for all over one by one. तो Brutus आके बोलते हैं कि भाई आप लोगों का सभी का हाथ मुझे दीजिए one by one. Cassius, let us swear our resolution. Come on, let us take an oath for our resolution means for our कॉन्स्पिरेसी ओके चैम्प्स आज इतना दूरी पढ़ाएंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो विल कम इन द सेकेंड पार्ट दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एक्ट 2 सीन 1 का पार्ट 1 है छोटा छोटा करके पढ़ने से क्या होगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली ओके फुल लॉन्ग वीडियो दे देने से आपको इंटरेस्ट चला जाएगा दैट इज द सेकेंड पार्ट आई विल गिव इन द नेक्स्ट वीडियो ओके टेक्स्ट बुक को अपने साथ में रखिए और मेरा वीडियोस को चला के सुनिए ओके अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगता है तो गिव अ लाइक ठीक है और कुछ भी दिक्कत आता है कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को प्लीज फील फ्री टू कमेंट ठीक है चैम्प्स अच्छी तरह से पढ़िए माता पिता का बात सुनिए एंड पे अटेंशन टू योर स्टडीज एंड आई नो ऑल ऑफ यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन मुझे बहुत काफी यकीन है Okay, bye to all of my champs.